पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम इन अदर वर्ड्स बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे टू वेक्टर्स की, इट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव स्केलर क्वांटिटी, यहाँ स्केलर है सिंपली। सपोज हमें फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दिस गिव्स अस वर्क विच इज स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह हमें फोर्स इंटू वेलोसिटी गिव्स अस मोमेंटम। इट गिव्स अस फ्लक्स, ठीक है। नंबर 7, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट बिटवीन ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज ए कम्यूटेटिव इन नेचर। क्या है? कम्यूटेटिव इन नेचर। दैट मीन्स जब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसका मतलब क्या हो गया? विच मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इन द प्रोडक्ट कैन बी चेंज्ड विदाउट इफेक्टिंग द रिजल्ट। तो कम्यूटेटिव मीन्स अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, हमें है ए डॉट बी, हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए बी, तो इसका जो रिजल्ट है इस पे हमें इफेक्ट नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इट इज ए कम्यूटेटिव, ठीक है। नंबर 2, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या है? जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है विद द सम ऑफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स, it is equal to the sum of dot product of vectors taken with other vectors separately। गोया कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर हम इसका सम करेंगे विद अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन इट कैन बी देन इक्वल टू द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स टेकन विद अदर वेक्टर्स सेपरेटली। सपोज हमें है ए डॉट बी प्लस सी प्लस डी प्लस सो ऑन, ठीक है। दीज आर द वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट इट इज मतलब जिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद अदर डिफरेंट वेरियस वेक्टर्स, इट इज, इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट डी प्लस सो ऑन, विच मीन्स दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। सो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। अच्छा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो ए डॉट बी है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, विच मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री when they are perpendicular to each other, which means a b cos of 90 डिग्री, ये जो cos 90 डिग्री है, it is equal to 0, therefore a dot b is equal to 0. So dot product of any two perpendicular vectors, it is equal to 0. That is I dot j, this is perpendicular vectors, is equal to j dot k, these are two perpendicular vectors, is equal to k dot I, ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नंबर 4 क्या है हमें? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स, that means the angle between them is 0, is equal to the product of their magnitude. Suppose the angle between it is theta, if theta is 0 or theta is equal to 180 degree, therefore a dot b
is equal to cos of 0 degree, that is equal to 1. Cos of 0 degree, cos 0, this is equal to AB, because cos 0 degree is equal to 1. Or A dot B is equal to cos of 180 degree is equal to minus AB, because cos 180 degree is equal to minus 1. So it is the dot product of two collinear vectors is always equal to the magnitude of the two vectors. Number 5th जो है property, dot product of equal vectors is equal to square of their magnitude. Dot product of two equal vectors is equal to the square of their magnitude. Suppose A dot A is equal to A cos of 0 degree, because the angle between two equal vectors is 0 degree, that is equal to A square. Similarly, अगर हम parallel vectors I dot I, it is equal to then I square. J dot J, these are unit vectors, two unit, it is equal to J square. And K dot K, it is equal to K square. ठीक है. So these are the properties of the dot product.